तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं ओरिगामी पेपर डायमंड। डायमंड बनाने के लिए हमने यहाँ पे 28x10 साइज में पेपर को कट किया हुआ है। इसे एक पेपर को फोल्ड करके हम डायमंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमें इस फोल्डिंग एक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है कि एक में 3 फोल्ड हो जाए। इस तरह से पूरा हमें फोल्ड करना है। इसे कंप्लीटली फोल्ड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। हम इसे बराबर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। देन यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से कंप्लीट हमें फोल्ड करते जाना है।
देन हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है इसे। इसे हम बैक साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। सभी को फोल्ड करना है इस तरह से। सेम इसी तरह हम इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें पूरा फोल्ड करना है। इसे थोड़ा सा दोनों कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से पुश करके
तो गाइस फाइनली ये हमारा ओरिगामी पेपर डायमंड बन के रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको